Well, I always wanted to do a film set in a college. It was something that I always wanted to do. So finally मुझे एक मौका मिला to tell a story which is set in a campus. And उस मौके को then I try to max it out by trying to do it as a bilingual and doing it two different languages, two sets of actors. Though I've done bilinguals in the past, but this is truly an authentic bilingual. When I say authentic bilingual, it has been shot twice with a separate cast, separate supporting cast. A very cooperative cast who all came together. We all came together and made this film with a lot of love, it's a labor of love. And the idea was to try and tell an authentic campus-based story. And something that I've not said before, but it's actually, the main incident in the film is actually based on a true incident that happened in a campus. I can't really talk much about the true incident, but the inspiration was from something that actually happened in one campus. And from there the story started, and of course, it took its own shape. Well, you were like one of the leads in that story. I am not the lead. No, in the true story, were you? No, I was not. Luckily, no, I was not. But I got like a first-hand account of something that actually happened. In fact, without revealing too much, one of the writers was part of the event. Oh, okay. Harsh, you're looking fabulous in the trailer. Looking forward to seeing you the film, and of course, it's a reunion with Vijay sir as well. Tell us, how did you prepare for your character? With Vijay sir, it is mostly I switch off all my buttons and just surrender. I love to surrender to him because he's more than a parent. I can say, you know, when you're dealing with your parents, you know they'll always look out for you and they'll always give you the best possible. So with him, I don't know why, but I feel like that. Sir, अपनी will में मेरा नाम लिखना. मैंने आपको parent बोला है. हाँ बिल्कुल. तो एक बात कही जाती है कि बड़े मशहूर कवि शायर कहकर गए कि अगर नई जनरेशन को गुस्सा नहीं आता है तो समझिए उस देश का भविष्य खतरे में है. यहाँ तो एक साथ बहुत सारे गुस्से वाले लोग रहते हैं. बहुत सारे गुस्से वाले हैं सब. उनको एकदम गिन चुन के मैंने इकट्ठा किया है इस फिल्म के लिए. बट आपका कहना मैं एकदम उसके साथ सहमत रखता हूँ कि तो मतलब आप अभी मैंने सुना आप लोग कॉलेज भी जाकर आए हैं. कॉलेज का माहौल क्या था? क्या आपको लगा बच्चों में वो गुस्सा, वो जुनून, वो जोश है जो शायद देश को आगे बढ़ाने में भविष्य सफल हो, ऐसे कहने के लिए काफ़ी होगा? जितना जुनून है मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं है, और होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. बट टुडेज जनरेशन I feel needs to kind of stand up more for what they believe in, and we are already on the right track, but I think that a bit of a push is needed. That's what I personally feel. आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे अगर आपने देखा है वहाँ पर नई जनरेशन को चूँकि आप फिल्म में पसंद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आज की जनरेशन कितना सही है और कहाँ कम पड़ रही है या कहीं गलत जा रही है? Our generation today is definitely woke, जो कहते हैं wokeism का जो culture है, and a lot has to do with social media also, क्योंकि लोगों को aware रहना ज़्यादा आसान है because it's easier to know कि क्या चल रहा है. आज बाहर के देश में क्या हो रहा है हमें यहाँ बैठे already पता है, and already we are taking a stand. So definitely there is aggression, but as he rightly said, there needs to be more, and I feel somewhere this film kind of shows that. जो एक अग्रेशन आज के यूथ में रहना चाहिए वो आपको इस फिल्म में दिखेगा. तो आई एम रियली होपिंग दैट लोग इसको देखकर इंस्पायर हो, थोड़ा सीखें, थोड़ा मज़ा करें जिस हिसाब से हमने ये फिल्म बनाई है. Harsh, you have a huge fan following, you know, all around, especially among the females, of course. So, what would you say? Why should they watch Dange? For Harshvardhan Rane, that's the answer. More than watch Dange, I want to find out where do they watch Dange. वो अगर ऑनलाइन आने के बाद देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरी पहली फिल्म को बहुत देखा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैपटॉप पे वो लोग क्या करते हैं मेरे प्रोड्यूसर को पता नहीं पड़ता है, थैंक गॉड, क्योंकि उसकी सर्च हिस्ट्री तो वो लोग चेक नहीं करते हैं मेरे प्रोड्यूसर्स. तो मेरे प्रोड्यूसर तक ये खुशखबरी पहुँचने के लिए थिएटर में ही देखना पड़ेगा. और किसी भी फिल्म का पार्ट 2 क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि पार्ट 1 की टिकट नहीं खरीदी गई. लैपटॉप पर प्यार मिल रहा है. इस फिल्म के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो इंसान इतने कामली बैठे हुए हैं, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. इट डजंट शो इट, बट इफ़ लेट्स नॉट यू नो पर्सनली, चलो इनके लिए अगर आप नहीं भी सोच रहे हो, एक फिल्म को अगर आप थिएटर में टिकट लेके नहीं देखेंगे तो इनकी मेहनत, प्रोड्यूसर की विजन, एक्टर का नेक्स्ट काम,
सब हम सबकी चीज़ों पे, मेहनत, हम हाँ। आई थिंक मोर देन दैट, जैसा आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है, आई पर्सनली फील दंगे एक ऐसी फिल्म है आप थिएटर में जाकर ही उसको जस्टिस कर पाएंगे, बिकॉज द वे यू विल एंजॉय इट इन ऑन द बिग स्क्रीन you may not enjoy it on the small screen. So that's why I just want to tell people, if you really want to watch Dange, go to the theaters and watch it. It's a big screen experience, Actually yeah. experience it. हर्ष, एहान और निकिता और सब आपसे पूरी Excuse me, आप पीछे can someone please maintain silence? It's very difficult for us to focus. Thank you, thank you. जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बहुत अच्छा। Thank you. जी, आपका ट्रेलर बहुत अच्छा है। आप तीनों से मेरा सवाल है, हर्ष पहले आप जवाब दें। आप, निकिता और एहान, आप लोग कॉलेज में कैसे थे? कितने जुनूनी थे? कितने कंस्ट्रक्टिव थे? कितने डिस्ट्रक्टिव थे? कैसा रहा आप लोगों का टाइम? या एकदम सीरियस आ गए? मुझे इस सवाल से बाहर रखिए, मैंने कॉलेज नहीं किया है गाइस। ये कर सवाल में कॉलेज में अभी हम गए थे इवेंट के लिए, वहाँ भी अवॉइड करके आए बड़ी मुश्किल से, पर देखा जी आपको ये पूछना था। थैंक यू। मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि एहान से भी और निकिता से भी कि बहुत क्या होता है कि कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि आप सोचते हैं कि वहाँ पर आपको एक वो एज में आपको सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, आपको अच्छा भी करना है, बुरा भी करना है, लेकिन वहीं से ही आपके आगे का जो एक होता है वो रास्ता एक अख्तियार होता है, वहीं से फॉर्मेटिंग ईयर्स वही होते हैं। सही बात जी, कही आप, जी, बिल्कुल सही बिल्कुल बात सही है। कह रहे आई थिंक एक चीज़ और होती है, जब आप कॉलेज में होते हैं आप समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा समझदार इंसान हैं, जो आप कर रहे हैं वो एकदम सही है। तो आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा कि हर इंसान सोच रहा है मैं सही हूँ, मैं एकदम करेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो एक बहुत ही एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट का यही एटीट्यूड होता है। एंड मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। जब कॉलेज में थी आई यूज्ड टू थिंक आई एम डूइंग द राइट थिंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग आई डू इज़ करेक्ट। तो उसके साथ ही लेकिन क्या होता है कि आपकी जो ज़िंदगी की पहली सीख होती है वो आपको इसी दौरान मिलती है, एंड दैट काइंड ऑफ डिसाइड्स योर फ्यूचर एज यू करेक्टली सेड। एंड एहान, आप सवाल कर हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ यार? कॉलेज में कैसा कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं थी, मतलब ऐसी थी या कुछ और थी? ऐसी ही नहीं ऐसी ऐसी नहीं। लफड़े वाली नहीं, लफड़े वाली नहीं थी। मुझे बिजनेस स्टूडेंट नहीं। एंड हर्ष, सो इहान का काउंटर पार्ट है कालिदास ने तमिल में इहान का पार्ट किया है, और संजना ने निकिता का पार्ट तमिल में किया है। तो आप ये सवाल इनके लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये कॉलेज में बहुत बड़े राउडी थे। ये दिखने में ऐसे बहुत स्वीट सिंपल लगते हैं, लेकिन ये कॉलेज में बहुत बड़े राउडी जयराम, राउडी जरा। राउडी जयराम। और संजना भी कुछ कम नहीं थी, संजना भी काफ़ी Jairam is his father. But he's Kalidas Jairam. Sorry, Jairam uncle. योर कॉलेज लाइफ। I did my college in Loyola, Chennai, but I never went to class. I spent most of my time in theaters watching movies, but yeah, I at least got to play a student in the movie, so I'd like to thank Vijay sir for that. And yeah, like Actually, even in the film, you're bunking lectures. yeah, so that's called method acting. So Kalidas, your name is Kalidas, or you could really write also? No, that's the name. It's just the name. Okay. Now, enjoy your name for your music. So what kind of music you expect? So this, it's always been part of my narrative. Okay, sorry. So music has always been part of my story narrative, and this film is no different. This film actually, the album has about 4-5 songs, but the film has about 14 songs as part of the structure. So I've used a lot of music, and because the film is for the young adult audience, I've tried to make it more accessible for them. So be it the way we have shot it, be it the way we have scored it, be it the way the kind of songs we have accumulated for the film, it is to try and connect to them the most. So I've tried. हर्ष से मेरा एक खास सवाल है। हर्ष, आपकी फिटनेस, आपका बंजारापन, आपका जो ये पूरा एटीट्यूड है, वो आपके इस रोल के लिए कितना काम आया? क्योंकि कॉलेज की लड़की का रोल है, तो वो जो आपकी जो पर्सनल लाइफ में जिस तरह से आप एक गुबक्कड़ी करते रहते हैं, जिस तरह से आप अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान देते हैं, वो कितना काम आया, कितना वर्क किया इसमें? मुझे कई बार ये लगता है कि मैं जो घर से भागा था एक्टर बनने के लिए, तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट से मुझे एक अलग तरह से जीने का मौका मिला। सो आई डोंट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि ये मेरी क्वालिटीज़ हैं,
बट जो भी घर से भागे हुए होते हैं वो थोड़े फ्री होते हैं, ऐसा मुझे लगता है. सो आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ क्रेडिट इन दैट. ये सब मक्कड़पन, थैंक यू, ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं फील होता है. और आई होप विजय सर के काम आया हो इसमें से कोई क्वालिटीज़. बट एक चीज़ जो मैंने लास्ट ईयर करी है, क्योंकि वो जो एम्बेरसमेंट है वो कॉलेज वाली, लास्ट ईयर मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में बीए भरा है. After the film, he did that. लास्ट ईयर लाइक जून में मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे, मैं रोज़ 3.5-4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ. तो ये मेथड एकदम मेथड होता है. कोई नहीं, मैं भी एमए कर रही हूँ अब. अरे वाह. ज़्यादातर उल्टा होता है, लोग पहले काम करते फिर फिल्म करते. मैं उल्टा हो गया मेरे साथ. मैंने पहले फिल्म करी और फिर मैं उसकी अब रिसर्च करा. विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि why not you continue with the same cast in the other language? So this is something I was very clear on right at the beginning, that I know it's very easy. Last couple of years we've seen that कि हम फिल्म को एक लैंग्वेज में बनाते हैं and we just dub it in all languages. And अभी आप कोई भी OTT में चले जाओ, आप फिल्म लोगे तो आप you can choose the language you can watch it in. So it's become very easy for audiences to choose. But I wanted to kind of try and go back and try and be as pure as possible, as authentic as possible to the language that I am trying to tell the story in. So this story is set in a college which is very universal, very resonates with students from all over the country. So I saw an opportunity to try and do this film for the Hindi audience and for the Tamil audience. मैं चाहे तो एक और लैंग्वेज भी कर सकता था, बट मैंने सोचा चलो 2 ले लेता हूँ. Seriously. But वो 2 जो मैंने उठाया तो मैंने बोला कि let's try and be, I know vanity man कितना हो जाएगा. Let's try and be as authentic as possible to the segment that we are catering to. So which is why we cast people from the Tamil industry for the Tamil audience. We cast Harsh, Nikita, Ehan for the Hindi audience, to try and stay as authentic as possible, so the audiences get to experience it in the purest way that we were trying to tell the story. कालिदास आपसे थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगी, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि साउथ की बहुत सारी फिल्में बहुत वाइडली और ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट की जा रही है. अब जब आप यहाँ आते हैं, कितना अंतर पाते हैं? क्या आपने कोई अंतर महसूस किया कि आपके ज़्यादा लोग ओपन हार्टेडली आपको एक्सेप्ट करें, ये महसूस किया? No, so I've played the part in the Tamil version. Now you're here, so that Yeah, I mean, see, it's always been a dream. Like I've seen like movies that T-series have made, and like I've been a huge fan of Vijay sir. Like especially after David, like I've always wanted to work with him. And David was like one among the lot of movies that I bunked class to watch. So it's a very surreal feeling to be part of his movie, playing the lead. And so Harsh's character in Tamil is played by Arjun Das. So he couldn't make it today. And yeah, like you said, I think audiences everywhere, they are like evolving, and I feel like the barrier is broken. Like this actor should do movies only in this language. I think that barrier is no longer there. Like people from South are doing movies in Hindi, like Hindi actors are doing movies in South. So I think that's not there. It's all about like choosing the right content, and I think as actors we also have a sense of social responsibility, and I make sure that like I'm whatever little bit political correctness that I have, that I think I have, so that's how I choose my movies. So इन्होंने आपको बिल्कुल आपने इनको कुछ रैगिंग वैगिंग किया या नहीं किया? ये उल्टा है. No, it was the other way around. It was the other way around. Always, he is the one who's. He's actually the one who's ragged everybody the most. No, no, no. सबसे ज़्यादा. मुझे भी रैग Including सबसे ज़्यादा इन्होंने सबको रैग किया है. This will be the headlines tomorrow. Ehan and Harsh, of course, आप लोग ने एक्शन के लिए कैसे प्रिपरेशन किया इस फिल्म में, और किस तरह का एक्शन हमें देखने का मौका मिला? हर्ष बताएगा ईहान के एक्शन के बारे में. हर्ष बार बार मुझे आके बोलता था, सर ईहान का जूता यहाँ छप गया मेरे यहाँ, छप गया. एक विजय सर की बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. म्यूज़िक के सेंस तो उनका बहुत स्ट्रांग है. एक्शन कई बार मैंने उनको पकड़ा है खुद कोरियोग्राफ करते हुए और खुद इन्वॉल्व रहते हुए, खुद मतलब विद द एक्शन कोरियोग्राफर्स.
और मुझे बहुत शक है कि वो कॉलेज में ऐसे ही थे, वो बताते नहीं। और मैंने सर के दोस्तों से भी इंक्वायर किया है, कई एक दोस्त आए थे इनके यूएस से, मैं उनको साइड में ले जाके पूछूँगा सर ऐसे ही थे क्या, क्योंकि दैश में भी जो रेज उन्होंने पोर्ट्रे किया तो मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन सही मिल नहीं पाई है, बट ऑल दैट कम्स फ्रॉम हिम और हमें फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज ही डिज़ाइंस इट इन अ वेरी ही डिज़ाइंस इट विद इमोशन। वो कभी भी विजुअल पे एक्शन नहीं करते कि ऐसा मारना वैसा, कि क्या फील कर रहे हो आप उस समय वैसे मारना, तो इनके एक्शन में हमेशा इट्स बैक्ड बाय इमोशन। I can safely say all of them, Arjun, Kali, Ehan, Harsh, even the women, TJ, Nikita so had a small accident also on set with the action. Arjun broke his teeth. Broke his teeth. I didn't break his teeth. So we had a lot of mishaps, and only because we were trying to make the action look as organic and raw and real, and also the action was just not, as you can see in the trailer also, it was just not about them in the action. You could see there were like almost 100-200 extras who were also part of the action. So दंगे थी, riot था, तो हमको वो we had to portray it as authentic as possible. तो उसमें कितना भी आप रिहर्स कर लो, कितना भी आप बैकग्राउंड एक्टर्स को बोलो कि ऐसा करना है, कोई ना कोई आके इनको टकराता था और they used to give it back to them also. So all that happened a lot, and luckily on the last day of the shoot is when one of the out of a crowd of 700 people, the firework went and landed exactly on Nikita's. Right here. I still have the mark. It was a proper burn that happened. Luckily, it was on like the second last day of shoot. Second last or last day, I think. Second last, because I had to come the next day. Last also she was fully covered. Her t-shirt had a collar. Still, it kind of. Band-aid and stuff like that. But I don't know. I feel like it was, even though, I mean, burn हुआ था अच्छा खासा, it was a proper third degree burn that I Firework had. actually came and landed on her. And because we were taking a one shot, I still remember जब तक कैमरा मेरे ऊपर आया तब तक ऑलरेडी फायर क्रैकर लैंड हो चुका था, उसको 1 मिनट हो चुका था. आई वॉज येलिंग एंड क्राइंग एंड बिकॉज देयर वाज सो मच क्राउड एंड नॉइज नोबडी न्यू अबाउट इट. So by the time these guys actually came to me, they didn't understand, am I acting, has something happened, because I was just jumping with pain. So then मुझे लगा क्या बढ़िया एक्टिंग. and finally I was rushed to the hospital and like it was fixed, but yeah. Actually, in the teaser and trailer also, there is a shot where you can see Ehan grabbing Harsh and they getting separated. There's a shot. Next time when you're watching it, next time when you're watching it, you have to watch Nikita in the shot. Somebody's managed to pull Nikita's hair in the shot. Somebody's managed to pull my hair from there. So if you see, it's there in the trailer. So in the when I'm trailer, you'll hugging see. Harshvardhan, somebody's pulled and I'm struggling like this. Ki bhaiya, chhod do. But the focus is so much on them that you're not seeing Nikita, but you can see Nikita is getting harrowed because somebody's pulled her. But you know, that used to be our situation because as he said, the film is full of a riot. तो हमने एक्चुअली शूट करते टाइम ये एक्सपीरियंस किया है. वी यूज्ड टू फील लाइक वी आर इन द मिडल ऑफ अ राइट. व्हेन वी यूज्ड टू बी स्टार्टिंग द शॉट, वी डिडंट नो व्हाट्स गोना हैपन, किसको क्या होने वाला है. वी यूज्ड टू जस्ट एंटर इट. Sanjana, I loved you in Sarpanta Parampare. In Tamil version we have seen desi touch is there. यहाँ हिंदी की बात की जाए तो वहाँ पे full class. Why so there is a difference? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने टोन, टेक्सचर एंड फ्लेवर दोनों फिल्म में एग्जैक्टली सेम रखा है. इनफैक्ट यू कैन इवन आई वुड से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द शॉट्स आर 90% ऑफ द शॉट्स आर एग्जैक्टली द सेम. तो मैंने कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं किया है. डायलॉग्स ऑफ कोर्स फ्लो के हिसाब से तमिल में थोड़ा अलग है, हिंदी में थोड़ा अलग है, बट अदरवाइज द फ्लेवर एंड in terms of the context, we have tried to keep it as similar as possible. You know, just to add on to this, one thing I really want to appreciate him for is that even though shots have been very similar, but not once he's asked us to replicate each other. Yeah. So even though हम लोग एक साथ shoot कर रहे होते थे, like the Tamil cast is doing one shot, then the Hindi cast comes, he used to never say कि see this is what you have to do or this is exactly. Not once also I said Not that. once. We have got the liberty to do whatever we felt like, whatever he was convinced with, we were convinced with. We literally got the liberty to do. तो अगर आप दोनों फिल्में उठा के देखेंगे, आपको शॉट टेकिंग सिमिलर दिखेगी, लेकिन ही इज गिवन अस दैट फ्रीडम कि हमने सबने अपने हिसाब से किया है. But there are so many times as cast we'll go to him and be like, see, listen, this is what they've created. Shall we do the same thing? He'll just be like, do what you have to do. Don't see that and take reference from it. We'll be like, okay, we'll just do what we have to do. So he was very clear as to what he wanted, which is two separate films, Dange and Por. And I think he chose the cast also perfectly for that. So When you write us, Dange or Por? Just take Poor side. both sides. No, I'll take his side.
I mean, why choose when you can have the best of both? I love your performance in Sarpata. It was very nice. Thank you, thank you. You're looking very beautiful in the teaser. Thank you so Can much. you tell us a bit more about your role, your character? I don't think I can say anything. He's sitting right here and you're asking me this question. But from whatever I, like throughout the process, the one thing that I really enjoyed was dressing up every day. Because in my previous works, I didn't really get to do that a lot. It was always very different, like compared to whatever I, like, you know, you see here in Pour. I used to look very different. So many times people will tell me, oh, I watched this film and I don't remember which character did you play. I'll be like, oh, is that you? This is exactly what I've been getting so far. This is probably very close to my real life, like character, physically and emotionally, maybe, I don't know. But yeah, I really enjoyed it. It's 2 hour 30 minutes. 2 hour 25, 2 hour 27, I think. Somewhere close to 2.5 hours. Thank you. Thank you. Ehan, one last question. We'll take one question. Karan Arjun कब देखेंगे? I think it's 92, right? तुमने कब देखी? तुमने कब देखी? I think I was 5 or 6 that day. एक्शन ये अपने इंडस्ट्री में एक बहुत सीनियर एक्टर हैं जो अपने एक्शन के लिए बहुत फेमस है. वो सच में मार देते हैं. There's another one coming up. सच में पीट देते हैं. He will be known for method acting, especially while acting. There's a saying, pain is temporary, film is forever. Scars and marks are also forever. जूते छप चुके हैं. Thank you. Thank you so much. Thank you. I wanted to say, आप लोग सब ने, you all came. Thank you so much for coming. But मेरा ये बहुत, it was my wish to show you both the trailers. Unfortunately, मैं तमिल ट्रेलर आपके लिए नहीं रेडी कर पाया. But आपने at least हिंदी देख लिया. But I think by later tonight we'll put both the Tamil and the Hindi trailer. दोनों देखिएगा. आपको वो फ्लेवर की बात आप कंपेयर करके देख पाएंगे. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. We'll do a good picture. Yeah. Shares. आसिम भाई नहीं हमारे बना को इधर ही बोल देता हूँ बुक करने वाला. This is a harsh and Ehan way of food. Say your left. Thank you so much. So one. निकिता जी सोलो. हेलो. हाँ. अरे निकिता जी. हाँ जी. सोलो आपका. को लेने दो. अरे बाद में ले लेंगे. अरे नहीं प्लीज लेने दो ऐसे. कॉलेज जाना है यार. कॉलेज ट्रेन है कॉलेज ट्रेन. निकलना है हो गया निकल रहा हूँ. बाद में मचाओ. अरे चल. निकिता जी ने लेफ्ट निकिता जी ने सुनता. मैं खा जाऊँ. रिकॉर्डिंग चालू है हमारी. निकिता जी सेंटर लो. निकिता जी लेफ्ट. निकिता जी अपने राइट में सेंटर और अपने लेफ्ट में. एक मिनट.